वेलकम फ्रेंड्स, हमारी सीरीज एंजाइम्स में आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। इसमें हम वेरियस फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी होती है टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। इसका रेट और वेलोसिटी को बढ़ाना, टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट इज द मेन एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब ये जब होता है, रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो उसमें कौन से फैक्टर एक्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे in detail. Factors affecting enzyme velocity. The first factor which affect enzyme activity is concentration of enzyme. तो हमें जब ये स्टडी करना है, ऑल प्लेसेस हम लोगों ने ग्राफ निकाले हुए विथ द फैक्टर ऑन द एक्स एक्सिस एंड एंजाइम की एक्टिविटी दैट इज वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन ऑन द वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ऑन द वाई एक्सिस। फैक्टर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज ऑन द एक्स एक्सिस। सो व्हेन enzyme concentration increases, there is velocity of reaction increases proportionately and product form will be directly proportional. तो जितना concentration of enzyme बढ़ेगा उतनी velocity of reaction बढ़ेगी, उतना product form ज़्यादा होगा। So this is the linear relationship. The linear relationship इसलिए बोल रहे हैं because concentration of enzyme, velocity of reaction and product form are directly proportional. So this is a linear relationship. You can see the linear graph. As enzyme concentration increases, velocity of reaction increases proportionately. So this is the first factor. Concentration of enzyme के बाद दूसरा फैक्टर है concentration of substrate. यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। इनिशियली ये आप देख सकते हो, y एक्सिस पे फिर से वेलोसिटी है, दैट इज एंजाइम की एक्टिविटी, x एक्सिस पे फैक्टर है, दैट इज concentration of substrate. तो इनिशियली व्हेन वी इंक्रीज substrate concentration, it is first order kinetics. First order kinetics मतलब the velocity of reaction is directly proportional to substrate concentration. Initially ये सेम है, जैसे velocity और enzyme का रिलेशन था। Initially it is the first order kineticity, velocity of reaction is directly proportional to substrate concentration. कब तक? It increases until it reaches a maximal rate. ये रेट आ गया maximal rate, मतलब ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम आर ऑक्यूपाइड। ये कब तक होते रहेगा? कब तक वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन फर्स्ट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में है? जब तक ऑल एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड एंड एंजाइम बिकम सैचुरेटेड। एंजाइम सैचुरेटेड हो गया मतलब क्या होगा? ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम आर ऑक्यूपाइड एंड एंजाइम इज वर्किंग एट द मैक्सिमम रेट। मैक्सिमम रेट मतलब V max. So at that level, this kinetics is now from first order it can become zero order. Zero order means velocity of reaction is constant. इसके बाद ये constant ही रहेगी and independent of substrate concentration. Independent मतलब अभी substrate concentration कितना बढ़ाते हो इसके ऊपर velocity of reaction dependent नहीं है. So what we are discussing, concentration of substrate. Initially concentration of substrate is first order kinetics, means velocity is directly proportional to substrate until it reaches the point where all active sites of enzyme are occupied by the substrate. Enzyme becomes saturated with the substrate. So now velocity of reaction becomes zero order. Zero order means velocity becomes constant and independent of substrate concentration. Velocity of reaction हो गई constant and it is now independent of substrate concentration, known as zero order kinetics. The graph is known as rectangular hyperbola. So effect of concentration of substrate and velocity of reaction, graph will be rectangular hyperbola. Initially it will be first order kinetics, directly proportional, all active sites occupied, then it becomes constant and independent of substrate concentration, that is known as zero order kinetics. Second factor. Third factor is effect of temperature. Y axis पे velocity, x axis पे temperature. When we increase the temperature, velocity increases with increasing temperature until it reaches a maximum. Velocity increases with increasing temperature until it reaches maximum and then it falls. अब इसके बाद ये fall होना शुरू हो जाएगी. So a bell shaped curve is formed. Bell shaped curve मतलब ऊपर गया initially and maximum temperature reach हुआ, which is called as optimum temperature. उसके बाद graph fall हुआ. So optimum temperature is we got. It is known as when maximum substrate is converted to product. This is the point where maximum amount of substrate is converted to product. That is called as optimum temperature. For most of the human enzymes, optimum temperature is 37 to 40 degrees Celsius. It is around 40 degrees Celsius क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ह्यूमन बॉडी के साथ रेगुलेट करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंजाइम्स इज 37 to 40. व्हेन इट क्रॉस 50 डिग्री सेल्सियस,
Denaturation of protein starts. Enzymes are protein, enzymes get denatured, and cross 70 degree all enzymes become inactive. So around 70 degree all enzymes become inactive. So effect of temperature on enzyme activity, the graph is bell shaped. It initially increases until it reaches maximum, that is optimum temperature, and then it gets fall down, which is bell shaped curve. Optimum temperature for most of the human enzyme is 37 to 40. That is maximum amount of substrate is converted to product. When it temperature crosses 50, denaturation start. When temperature crosses 70, enzymes become inactive. Fourth factor is effect of pH. This graph is again similar to the effect of temperature graph, because what is the effect of pH? The hydrogen ion concentration influence enzyme function by altering the ionic charges on amino acid at the active site. जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे अमीनो एसिड है उसका आयोनिक चार्ज अफेक्ट होता है डिपेंडिंग ऑन द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन. पीएच डिपेंड करता है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन में, एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अल्टर्स आयोनिक चार्जेस ऑन अमीनो एसिड एट एक्टिव साइट. सो the graph which we get again, it increases until maximum, then it falls. So bell shaped curve again we are getting. Temperature may be bell shaped, pH may be bell shaped. Optimum pH for most of the human enzyme is 6 to 8. Neutral pH range में most of the human enzymes are active. Above and below this pH enzyme activity become lowered. 6 से थोड़ा नीचे या 8 से थोड़ा ऊपर enzyme activity become lowered, and at extreme of pH enzymes become totally inactive. At extreme pH enzyme become inactive. So below and above the optimum pH enzyme activity gets lowered, and at extreme pH enzyme become totally inactive. Exception to the rule, pepsin, the enzymes in the stomach, the gastric they are active in the acidic pH of 1 to 2. Acid phosphatase, as the name suggests, is active in the pH of 4 to 6. Alkaline phosphatase, it is active in the pH of 9 to 10, as again name suggests. So these are the exception to the rule. Otherwise all human enzymes are active at optimum pH of 6 to 8. Fourth factor. So these four factors जिनमें ग्राफ है, all these are very good to write in the exams. इसके बाद के factors में ग्राफ नहीं है. Like effect of product concentration, if final product is formed, it will inhibit the pathway. So this is called as feedback inhibition. So if final product is accumulated, it will inhibit the pathway. This is called as feedback inhibition. So product concentration, product will inhibit the pathway. Effect of activator, you know activator is inorganic cofactor which enhance enzyme activity. So they will increase the activity of, increase the velocity of the reaction. Effect of inhibitor, as the name suggests, they will decrease the velocity of reaction. So they will decrease the velocity of the reaction. Activators में हमने बात की थी, cofactors में we have seen activators which enhance the enzyme velocity. Mostly they are metal ions, so copper, magnesium, manganese, zinc are the activators. Inhibitors lower the enzyme velocity. इसके ऊपर अपन डिटेल करने वाले हैं, what is competitive and non competitive inhibitors, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. Effect of time, अंडर आइडियल कंडीशन अगर टेम्परेचर अच्छा है, पीएच अच्छा है, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज लेस. सो अंडर आइडियल कंडीशन टाइम रिक्वायर्ड विल बी लेस. इफेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन में हम एक्स रे, यूवी रेज, गामा रेज की बात कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंजाइम्स आर प्रोटीन्स गेट इनएक्टिवेटेड विथ लाइट एंड रेडिएशन. सो अगर लाइट और रेडिएशन का इफेक्ट रहा तो इट विल इनएक्टिवेट द एंजाइम्स. जब हम ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, सो वी शुड रिमेंबर we have seen concentration of enzyme. Here the concentration of enzyme is directly proportional to velocity of reaction and directly proportional to product form. Linear graph is seen. When we discuss concentration of substrate, initially it is first order kinetics. Velocity is directly proportional to substrate concentration. Then all enzyme sites get occupied. Enzyme becomes saturated. Then it becomes zero order. Velocity is constant and independent of substrate concentration. Rectangular hyperbola. Effect of temperature. First, when we increase the temperature, velocity of reaction increases until maximum, then it falls. Bell shaped curve is seen. Optimum temperature for most of the human enzyme is 37 to 40, where maximum substrate is converted to product. Above 50, denaturation starts. When it crosses 70, most of the human enzyme become inactive. Effect of pH, hydrogen ion concentration alters ionic charges of amino acid at active site. Again, it is a bell shaped curve. Optimum pH for most of the human enzymes 6 to 8. Below and above this pH, most of the human enzymes are activity gets lowered, and at extreme pH, enzyme become totally inactive. Exception is pepsin 1 to 2 pH, acid phosphatase 4 to 6 optimum pH, alkaline phosphatase 9 to 10 optimum pH.
Product concentration, if product is accumulated, it will inhibit the pathway known as feedback inhibition. Activator will increase the velocity of reaction, inhibitor will decrease the velocity of reaction. Every time, under ideal condition, time required will be less, and light and radiation will inactivate the enzyme because they are protein in nature. यहाँ पे कॉन्सेप्ट है Km का. व्हाट इज Km? Km के लिए हमें ये ग्राफ फिर से देखना पड़ेगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ऑन वाई एक्सिस. So when we draw the graph, these two enzymes, keep in mind these two enzymes, enzyme 1 in black and enzyme 2 in red, दोनों enzyme 1 ऊपर गया and Vmax reach हुआ, all active site occupied. You can see this is rectangular hyperbola. enzyme 2 के साथ भी वैसे हुआ. ये initially linear था, उसके बाद constant and independent हुआ. So this is first order kinetics initially, then it is zero order kinetics. Vmax for both the enzymes is same. हमने क्या किया, Vmax के आधा वैल्यू को Vmax by 2 बोला, वहां से परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे इस ग्राफ पे, और वहां से परपेंडिकुलर डाला सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के एंगल पे. सो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ Vmax, ये Vmax की आधी वैल्यू है, हाफ Vmax. इसको जो बनने के लिए जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लगता है, दैट इज कॉल्ड एज Vmax by 2, दैट इज कॉल्ड एज Km. उसको नाम दिया Km, ऑल्सो कॉल्ड एज Michaelis Menten constant Km. What Km denotes? Km denotes affinity of enzyme for the substrate. What does it denotes? आप देख सकते हो एंजाइम 1 का Km वैल्यू कम है. Km वैल्यू 1 है, कम है, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी ज्यादा थी, जल्दी रिएक्शन हुई, जल्दी ग्राफ ऊपर गया. सो लो Km वैल्यू फॉर एंजाइम 1 डिनोट्स हाई अफिनिटी ऑफ एंजाइम 1 फॉर द सबस्ट्रेट. व्हाइल एंजाइम 2 की बात करते हैं तो Km वैल्यू ज्यादा है. सो हाई वैल्यू ऑफ Km इट डिनोट्स लो अफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट. इसका मतलब रिएक्शन होने में ज्यादा टाइम लगा, एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी कम थी. अल्टीमेटली जहां पे जाना था Vmax वही रीच हुआ, बट यहाँ पे अफिनिटी कम थी फॉर एंजाइम 2. सो Km हाई, लो अफिनिटी. एंजाइम 1 लो Km, हाई अफिनिटी. सो लो Km डिनोट्स हाई अफिनिटी, high Km denotes low affinity. So Km is inversely proportional to affinity. Km denotes strength of enzyme substrate complex. Km की वजह से पता चलता है कि enzyme substrate complex की strength क्या है. So Km is a concept where Michaelis Menten constant इसको बोला गया है. What is the definition? Km is nothing but it is substrate concentration. Km is nothing but substrate concentration. You can see on this graph. Km is substrate concentration to produce half the maximum velocity. Km is substrate concentration to produce half the maximum velocity. So Km is substrate concentration on x-axis to produce half the maximum velocity on y-axis. Km denotes affinity of enzyme for the substrate. Km denotes strength of ES complex. Low Km denotes high affinity. High Km denotes low affinity. So Km is inversely proportional to the affinity. So that is the thing about Km. This will be very helpful when we understand enzyme inhibition. वहाँ पे ये concept बहुत काम में आएगा. So what we discuss is factors affecting enzyme activity. Concentration of enzyme linear, directly proportional. Concentration of substrate rectangular hyperbola. Initially first order kinetics, then zero order kinetics. Effect of temperature, effect of pH, both bell-shaped curve. Optimum pH is 6 to 8 and optimum temperature is 37 to 40 degrees Celsius. Effect of product concentration, product decreases velocity of the reaction. Activator increase and inhibitor decrease the velocity of reaction. Time under ideal condition is less. Light and radiation inactivate enzyme, and Km is substrate concentration to produce half the maximum velocity, which denotes affinity of enzyme for the substrate. Hopefully यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हुआ होगा. Thank you very much.